ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप. All right, so we did the up to the second Ashtapadi. We'll start with the third one. I'll just read the last shloka that we did. We talked about it, but we didn't explain it. बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्ब ढिढोली पूजसी नाही हरि हरे नानक नाम अमोल. कहते हैं they are talking about that people who have done all the scriptural studies, you know, बहुत सारे शास्त्र पढ़ डाले, बहुत सारी स्मृतियां पढ़ डाली, you know. It's okay if I speak in Hindi, right? क्योंकि it is closer to this. So पेखे मतलब देखे. कहते हैं सब सब सर्ब डिडोल मतलब उनके अंदर सब ढूंढ लिया मैंने. बट द एसेंस दैट आई फाउंड वाज पूजसी नाही हरे हरे हरि हरे. मतलब जब तक आप भगवान का नाम नहीं पूज लेते, यू नो, वेयर इफ यू डोंट गेट डाउन टू दैट पर्टिकुलर, यू नो, एसेंस कि भगवान. सी व्हेन यू से नाम, नाम doesn't just mean mechanical repetition. It also means to imbibe the value that that word brings. See, हर नाम के साथ अर्थ भी होता है, हर नाम के साथ उसके गुण भी होते हैं, you know. So you have to basically understand the whole package, you know. So भगवान they say that हरे नाम हरे नानक नाम अमोल, that it is priceless, that the naam is that, you know, once you understand the full package of that naam, you know, the name, the essence, the guna, the you imbibe that into you, and when you repeat it you basically are trying to become that, you know. That's the whole goal. Otherwise taking name of somebody doesn't mean much till it actually has an impact on my own self. So that's the last shloka that we did. Okay. Now I'll read the next. I'll do one at a time. So जाप ताप ज्ञान सभी ध्यान खट शास्त्र स्मृति बखियान जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्यागी बन मधे फिरिया अनिक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान हो में बहु रत्ना शरीर कटाई हो में करी राती वरत नेम करे बहु भांति नहीं तुली राम नाम विचार नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार. This is very beautiful. Okay. I don't know how much you understood from just the chanting, but let's कहता है जाप ताप ज्ञान सभी ध्यान. मतलब we have tried all kinds of practices, you know, different sadhanas are there. Jap, you know, just the repetition. ताप तप करना. ज्ञान मतलब reading scriptures and, you know, understanding the concepts. Sabhi dhyan, and also meditation, all that. Khat Shastra means the 6 lines of philosophies that, you know, we have talked about it. Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa, Yoga, Vedanta, all these things we have done, you know. Khat means shat. Shat is coming from Sanskrit. So, 6 Shastra पढ़ लिए और Smriti and the commentaries on them. Bakhyan. Bakhyan means the commentaries that were written to explain those things. Yoga Abhyas. I have done my yoga. Yoga Abhyas
doesn't mean just the physical yoga. It means that I have used the eight, the जो कहते हैं क्या, अष्टांग, 8 angas of yam, niyam, pratihar, asanas, all that I have done, yoga abhyas, karma, dharam, kirya. So needs no explanation. Karma, dharma, kirya. That means I have done all of these, Sagal tyagi ban madhe phirya. Ban madhe phirya is like in the middle of forest. Ban is forest. Madhe means middle. So Sagal tyagi. By denouncing everything, I have roamed around in the middle of the forest, and अनेक प्रकार किए बहु जतना. बहुत ट्राई किया मैंने कि आई शुड गेट देयर. पुण्य दान हो में बहु रत्ना. और बहुत सारे पुण्य दान भी किए. यू हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ चैरिटीज, ऑल काइंड्स ऑफ होमर्स, द यज्ञ, एंड बहु रत्ना मतलब गिवन ज्वेल्स इन चैरिटीज. शरीर कटाई हो में करी राती. मतलब शरीर कटाई मीन्स you have tortured yourself many times, home kari rati. Or homas you have done. Homas matlab the agnihotra or whatever different type of havan that you have done. Bharat name kare bahu bhati. Bharat, the fastings. Name means following a certain ritual. करे बहु भांति, बहुत तरह से करके देखा है. नहीं तुली राम नाम विचार. That all this combined together is not even equivalent to Ram Naam Vichar. They didn't say chanting here. They said Ram Naam Vichar. विचार करना है उसके ऊपर. विचार में क्या क्या आ जाता है? विचार के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं. When you start thinking about who is Ram, see, first stage of Ram is understand Ram as the son of Dashrath. जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा. एक राम जिन जगत उबारा, एक राम इन सबसे न्यारा. So एक तो राम है. So first you understand the qualities of Ram that was manifested in the form of son of Dashrath. So उससे क्या क्या हमें मिलता है कि how we can imbibe those samskar, how he followed his life. That is one thing to. Then you go deeper into that. Okay, is that Ram just that, or is there Ram means something more? So then it says that everything that is manifestation, the substratum of that is only Ram, that essence of this universe. And when we say, okay, if universe is essence, but somebody must have created it, that creator is also Ram. So essence is Ram, the creator is Ram, and he is also beyond that creation. That means he is not just limited to the creation. That means in one, let me think of another example. जैसे तुलसीदास जी से कहते हैं रघुपति भगति संजीवनी मूरी. रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपात श्रद्धा मति पूरी. यही विधि भले ही सो रोग नसाई, ना ही न जतन कोटि नहीं जाए. कहते एक क्वेश्चन पूछा था जो जब गरुड़ जी को मोह हो गया. मोह मीन्स wrong understanding. So sometimes moho is used for attachment, but that's not the Sanskrit meaning of moho, and that is now how the scriptures use it. So Garudji went to काकभशुंडी जी, क्यों उनको शिव जी ने भेजा कि जाओ काकभशुंडी जी से ज्ञान लो. So he asked, all kind of question, and Kakbashundi ji told the story of Ram to Garud ji. In the end, he asked 7 questions.
So not going into 7, but the last question was, why is it that people are suffering so much? What is this? And the word he uses, Manas Rog. Manas Rog means mental diseases. Every problem that we have has to do with how our mind reacts to it. A problem is only till I consider it a problem. If I consider it as a Hari Prasad, then I just accept it the way it is, and then move on. So he says ki if that is the case, this Manas Rog, so he said, okay, the Manas Rog is because Tulsidas ji says, Moha sakal vyadhinkar mula, inte upje bahukrit sula. Said the root cause of all problems is moha, that I don't know who I am. I have considered myself to be this particular identity, this ego, as this body, this mind, this all my thoughts, all my relationship. I am center of that particular identity. That is the first mool, the cause of my problem. Because of that, all kinds of other problems are there. So Garudji asked, so is there a solution to it? There must be a solution. If there is a problem, then there is no point if somebody says there is a problem and then he ends the discussion. You have to tell kuch to solution batao ji. So he says ki Raghupati Bhagati Sanjeevani Muri. Muri means दवाई. संजीवनी दवाई जो है वो है रघुपति भक्ति, राम की भक्ति. अनुपान श्रद्धा मति पूरी. अनुपान होता है जैसे जब कोई डॉक्टर दवाई देता है तो उसको कहता है अच्छा इसके साथ ना आपको ये भी लेना है, यू ईट इट विद दिस मील, और इस मील के अंदर डोंट ईट एनी शुगर और डोंट ईट एनी दिस थिंग, तो उसको बोलते हैं अनुपान. सो अनुपान क्या है उसके अंदर? यू हैव टू डू भक्ति बट विद श्रद्धा मति पूरी. मति पूरी मीन्स and focus, and with all your heart and mind into that. It's not just ki you read it, it has to be with lot of shraddha. What I am doing is going to lead me somewhere. So ehi vidhi bhalahi so rog nasahi. Matlab this is the only way to remove this manas rog, the mental agitations, mental afflictions. You remove all that. नहीं तो जतन कोटि नहीं जाए. नहीं तो आप हजारों तरह से ट्राई कर लो. एंड नाउ हियर आल्सो भगवान इज गुरुदेव इज सेइंग हियर कि नहीं तुली राम नाम विचार. सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, ओके, स्टडी स्टार्ट विद राम नाम. Then you say, okay, who is this Ram that we are talking about? Then you go start with the character of Ram, then you go into the substratum Bhagavan, then you go into the creator Bhagavan, and then you go beyond that. So that's what it is. So nahi tuli Ram naam vichar. Iske tulya matlab there is nothing equivalent to that. You have done all that what they talked about, but Ram naam alone is enough. Like in Vishnu Sahasranam, it says राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान. Yes. So the word vichar is used here. Is that used in the sense of inquiry or contemplation? Vichar. Contemplation. Contemplation. It is when we say vichar is the key in any sadhana. Without vichar, nothing happens. Vichar is when you go deep into that with full shraddha and with vishwas, Shraddha Vishwas ke saath jab you do the vichar, then it opens up. See, even when you study science, you have a higher, kya bolte hain usko, 500-foot view of the thing. But when you deep down, then you say, aha, I get it now, why this happens. So this aha moment will happen with vichar. Without vichar, nothing happens.
Yeah, I've And seen it then, used in Adhyatmic texts like Raman Maharishi, Atma Vichar, who am yeah, I? All these inquiries are there. So, Vichar is the key in, even if you go to Yoga Vasisht also, it says there are four things, they're called Dwarpal. The four, so it's the, कहते हैं सत्संग, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर क्या क्या थे चार चीजें, बट उसके अंदर वन ऑफ द की एलिमेंट इज विचार, that without vichar you cannot move forward, you know. So you guys have done that yoga Vasisht, so just remind me if you remember. One is and the other one was santosh, satsang, santosh, vichar, and I'm trying to remember the fourth one. So maybe if anybody remembers, just let me know. Vairagya. huh? Vairagya. Vairagya, vairagya, vairagya. Thank you. So without that, okay, so it ends with this नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार. अरे यार, एक बारी तो लो, ट्राई दिस, यू नो. जैसे डॉक्टर कहता है, बट दवाई आपने खाई थी? नहीं, दवाई नहीं खाई थी, बट ठीक हो जाऊं मैं. पहले दवाई तो खाओ, यू नो. सो this is equivalent to all of the other things that we have. It doesn't say that other things are no good. Other things will give us that ability to do vichar. So those are important, but they are not the ones that will reveal that truth. So nahi tuli Ram naam vichar, नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार, कोशिश करो, you know. That's Bhagwan's request actually. After telling all this, you know, Gurudev is requesting कि please एक बार जप लो. Now he is saying the other things that people have done, you know, to get that. But he says, and in the end he explains what is the real essence now. So now Khand Prithvi Phire Chiru. Achha, let me read it in the now Khand Prithvi Phire Chiru Jive Maha Udas Tapiswar Thive Agni Mahi Ho Mat Paran तनिक अश्व है वर भूमिदान नियोली कर्म करे बहुआसन जैन मार्ग संजम अति साधन निमख निमख करी शरीर कटावे तौ भी हो में मैलु न जावे हरि के नाम समरसी कछु नाही नानक गुरुमुख नाम जपत गति पाही. I think most of it we understand just by this chanting. Now Khand Prithvi. That means I have visited the 9 continents. They would say Khand, these are the different continents or the islands or whatever. I have, you know, you visit them. And Chirujive, and has lived a very long life. You know, now they are talking about people who have done tapasya like that. Chirujive, long life. And Maha Udasu Tapiswaru Thive. And they are Udasu they are, Udas doesn't mean the Hindi Udas. Udas the one who is unmoved by the worldly changes. He is very well established in himself. And Tapiswaru, he is Tapishwar. That means he can work hard. He has the ability to achieve things, you know. Tapiswaru thive Agni Mahi Ho Mat Paran. He has even given his body in the Agni, you know. Agni Mahi Ho Mat Paran. पूरे प्राण डाल दिए उसके अंदर. इसके डबल मीनिंग भी हो सकते हैं कि you have sacrificed yourself or you have worked really hard, that you have put all the efforts in the karma kand. Yeah, this is kind of talking about karma kand piece here, that through karma kand you can't achieve that. We, same as Raman Maharshi has said,
और अग्नि, अच्छा, कनिक अश्व हैवर भूमि दान. Kanik is gold. So gold, horses, you have given jewels and the land. So you have given all this dan. Niyoli karma kare bahu asan. Niyoli karma is yogasan basically. So you have done yoga, you have done बहुत तरह के आसन किए आपने. और then he compares it to Jain Marg. So Jain Marg Sanjam Ati Sadhan. That means they have, in Jain, they have to be very cautious because their first goal is that nothing should, क्या बोलते हैं उसको, no prani should be hurt, So they have to take extra precaution, put a mask. Even when they walk, they have to walk in a particular way so that they don't step on anything. So that's one part of it. And then they also do a lot of sadhana, which requires, they would like pluck their hair one by one, ऐसे उसमें भी लिखा है अपना in the Bhaj Govindam, they talk about that also. Nimik nimik kari saruru katave. Even they torture themselves, तो भी हाउ में मैल न जावे. हाउमी इज द ईगो, द अहंकार. कहता है जो अहंकार का मैल है वो नहीं जाता. इवन बाय डूइंग ऑल दैट, व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू डू तपस्या, योर अहंकार सेज आई एम ए तपस्वी नाउ, so that ahankar takes a different form, but ahankar doesn't give. See, what is the male of mind? If you go back to our Bhagavad Gita, 3rd chapter, so male is nothing but raga dvesh of our mind. That means I like this, I don't like this, this is better, this is worse. So that whole idea about raga dvesh in me is, here it is part of the ego. Ego is a wrong identity, that I am this body and I am doing this role as a, now here they're talking about different type of practices, yoga practice, Jain practice. So these practices may give you siddhis, but they will not give you that peace that you are looking for, so that peace, tau bhi how mein mail na jave. That means that how mein is in me, that ego, that ahankar doesn't go away, hari ke naam samrasi kachu nahi. Samrasi means equivalent. There is nothing equivalent to the hari naam. उसमें कुछ effort भी नहीं है, you just have to remember in your mind, you just have to keep. See, in Buddhism also, they were not for the life of a lot of torture or karma kand. It was about vichar, about, so very similar to that. So if you think about it, there are a lot of similarities here with different things. Even Vedanta says the same thing. If you read the Bhaj Govinda, very similar. So नानक गुरुमुख नाम जपत गति पाही. गति पाने के लिए नाम जपना इज द इम्पोर्टेंट. दिस इज सुखमणि साहब का जो कोर है ना, इज दैट अलोन, कि यहाँ पे पहले विचार कहा था, अब यहाँ पे जपना का है, बट हियर जपना इज नॉट जस्ट मैकेनिकल जपना. इट इज you have to do vichar on that. So that is important. So now the third one, मन कामनाती रत देह छूटे, गर्भ गुमान न मन ते हूटे, सोच करे दिन दिन सु अरु राती, मन की मैल न तन ते जाती. इस देही कहू बहु साधना करे, मन ते कबहु न बिखिया टरे, जली धोवे बहु देह अनीति, सुध कहा कोई की काची भीति, मन हरि के
नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच. So continuing on the same thoughts, it says कि मन कामना तीरथ देह छूटे. एक मेरी कामना है कि मैं काशी में जाके मरूं, दैट, कि वहां पे कहते हैं कि काशी में जो मरता है सीधा स्वर्ग पाता है. ठीक है, ऐसी कामना भी होती है लोगों की. सो ऐसी कामना वाले मन कामना तीरथ देह छूटे, कि इसलिए आई वांट टू गो स्पेंड माय टाइम देयर सो दैट व्हेन आई डाई आई गो स्वर्ग. दिस इज वन थॉट. गर्भ गुमान न मन ते हुटे. लेकिन जो दैट आइडिया ऑफ I am so and so, I am this, I am that, all that egotistical thought process or इच्छाएं, those don't leave me, they are गर्भ गुमान न मन ते हुटे, that I am not hate, that I am not able to remove those. The सोच करे दिनसु अरुराती. Now soch here is not the thinking. Soch means shauch. That means cleanliness. You are like constantly taking bath 7 times a day or whatever, you try to stay away from all the mal, whatever you do. Soch kare dinsu arurati. That they are very particular about, OCD type. They want to be absolutely untouched by the worldly, the what they call as mal of the world, और मन की मैल न तन ते जाती. मतलब जो मन की मैल है, वो कितना भी आप शरीर साफ कर लो, कितना भी यू रिस्ट्रेन फ्रॉम अदर थिंग्स, मन द द मन की क्लेंजिंग एंड शरीर की क्लेंजिंग आर टू सेपरेट थिंग्स. They cannot be combined. That's what it is. कि you can do whatever you want. तनते जाती मतलब you cannot remove the मन की मैल. Yes. So 2 things. One is कि I understood कि वो क्रिया कर्म में तो थोड़ा अहंकार होता है कि I'm doing this, I'm doing that. लेकिन this profound message of Sukhmani साहब कि आप सिमरन करो और नाम जपो, even that in principle one can have thought कि मैं तो सिमरन कर रहा हूँ, मैं तो नाम जप रहा हूँ. तो actually Sure. the real message is to be, it's a code word, right? Simran or naam jap, it doesn't mean any other kriya or jap or something like that. It's really what you're saying, ki deep vichar. That's one thing. Secondly, even like ye jo hai na, jaise discipline of some kind. Let's say you are patient, you don't try to harm others. मतलब चित्त शुद्धि के लिए तो करना ही पड़ता ही है ना. मतलब even actions of body, speech, and mind, which you restrain yourself, you follow some discipline and things like that. मतलब they themselves will not get you the सिमरन, लेकिन कुछ उसमें भी तो करना पड़ता है ना. Okay, this next things will clarify it. एहु देही कऊ बहु साधना करे. मतलब इस देह से बहुत साधना करी मैंने, बट देह से साधना करने से मन का मैल नहीं जा रहा है. दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से हियर. एहु देही कऊ बहु साधना करे, मन ते कबहू न बिखिया टरे. बिखिया मतलब उनका, लेट्स से कि मन में वैराग्य पैदा नहीं हुआ है साधना करने से. आई वॉज नॉट एबल टू, क्या बोलते हैं उसको, डेवलप दैट सेंस ऑफ आई एम नॉट दिस. दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू वर्क ऑन. और जली धोवे बहु देह अनीति. जली धोवे, you can clean your body, that is something you have access to, देह अनीति. शुद्ध कहा होई का. इट्स नाउ गिविंग एन एग्जाम्पल एक्चुअली, कि एक अगर कच्ची मिट्टी का दीवार है, उसको धोने से वो साफ नहीं होगी. You can put water as much as you want, but it won't have that sense of. लेकिन पक्की दीवार जो होती है,
You can clean it, paint it, it'll shine. But कच्ची मिट्टी की दीवार को आप क्या करोगे? You know, it just has to be the way it is. There's nothing you can do about it. You know, जली धोवे बहु देह अनीति. अच्छा, यहाँ पे दिस इज द एग्जाम्पल. शुद्ध कहा होई काची भीति. काची भीति मतलब कच्ची मिट्टी का. कच्ची मिट्टी का घर को आप क्या कर सकते हो उसमें. और मन हरि के नाम की महिमा ऊंच. एक बारी वंस यू अंडरस्टैंड, इट इज अ, you are basically surrendering your ego to that naam. Naam is not just naam, it is the full package. नाम के साथ उनके there has to be a different identity that goes with it, right? नाम के साथ कोई रूप भी associated होगा. बिना रूप के तो नाम को कोई वैल्यू नहीं है. If I just say घो, so it won't mean anything. When I say Ram, there is an image that pops up in our head, right? So that image, that guna, that essence, once we surrender our ego to that, you know, so man hari ke naam. Now कई सारे उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं, राम, हरि, यू नो, आगे और भी आएंगे. मन हरि के नाम की महिमा ऊंच, दैट मीन्स इट इज द हाईएस्ट. और नानक नाम उधरे पतित बहुमूच. बहुत, you know, that word has come before also. Mooch means the downtrodden, the people who have, patit means fallen, that they have fallen from the highest identity. So उससे जो गिरे हुए हैं वो भी, उनका भी उद्धार हो गया. They have also reached the highest goal. So that is the point here, you know, that we are talking about. Yeah, you have a question? Patit does not mean मतलब lower caste. It means जो अज्ञान से गिरे हुए हैं, मतलब जो बहुत ही, और जो ने बहुत ही पाप Patit वाले. could be anything. Patit could also mean that the society has rejected them. Patit could also mean that I have myself has said कि मैं तो इनके बराबर नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ. You know, both of them would be the same thing. Either society has done it or you have yourself done it. You know, so okay. Now again the same. बहुत सियाणप जम का भव व्यापे. बहु सियाणप जम का भव व्यापे. अनेक जतन करि त्रसन न ध्रापे. भेख अनेक अग्नि बहु बुझे. कोटि उपाव दरगह नहीं रीझे. छूटसी नाही उब पयाल. मोहि बियापहि बाया जाल. अवर कर तूती सगली जमु डाने. गोविंद भजन बिनु तिलु नहीं माने. हरि को नाम जपत दुख जाई. नानक बोले सहज सुभाई. दिस इज इम्पोर्टेंट वन. बहुत सियाणप मतलब आई एम वेरी इंटेलिजेंट, यू नो. सियाणप मतलब बड़ा सियाना है, बहुत, ही इज वेरी स्मार्ट, यू नो, वर्ल्डली स्मार्ट. बहुत जम का भव न व्यापे. उसको भी the fear of death doesn't go away. I may be very smart, I can recite things, I can talk about things, but that fear of death has not gone away. Anik jatan kari trishna dhrape. Trishna means trishna, the desires. बहुत कोशिश करने पर भी the desires don't go away, you know, न dhrape, they don't go away. भेख अनेक अग्नि नहीं बुझे. भेख अनेक मतलब I have tried to change my clothes. That means मैं सन्यासी का रूप भी ले सकता हूँ. मैं किसी का भी, you know, I can try different sects, you know, I can become a, ये लगा कि ये अच्छा है यार, I should try this, become a sadhu, become a सन्यासी, you know, different robes you can wear. But भेख अनेक मतलब भेष जो है आपने अनेक तरह के ट्राई कर लिए. अग्नि नहीं बुझे. अग्नि मतलब मन की अग्नि, that desires, that they don't get quenched because of that. और कोटि उपाव दरगह नहीं सीझे मतलब I don't see my clear goal. दरगाह नहीं सूझे मतलब I don't see that goal, the final goal. कोटि उपाव मतलब I've tried crores of
ways of doing it, but I don't get it, you know. छोटी सी नहीं वो भी पियाल. अच्छा, this is a technical word. Ubhu piyal. These are the people who are who use trickery to tell people, see, I am a realized master. I can fly in the air. I can do this. I can bring ash in my hand or whatever, you know. I'm not pointing at anybody, but I'm just saying people have these some siddhi that then they project it as if they are realized master, you know. Mohi biyapahi maya jal, that they are still stuck in that maya jal. They are not out of it. So don't fall prey to the people who are showing you tricks to attract you towards them, you know. These are like magicians. That's what Guruji says here, that they are themselves stuck in the maya jal, you know. Mohi beapai maya jal avar kartuti sagli jamu dane. That means avar kartuti, by doing all these things, you know, by they are themselves getting stuck in the in this maya jal. लेकिन गोविंद भजन बिनु तिलु नहीं माने. बिना, now here the word is used is गोविंद. So राम का नाम लिया, गोविंद, हरि का नाम लिया, अब गोविंद पे आ गए. But point is, any name you take, it is Bhagwan's name. So that's another point that we have to understand, that the Guru Granth Sahib is not focusing on one name. This is the only way you can do it. अभी आगे आएगा गोविंद का नाम, you know, sorry, the different names are there, I'll show you. गोविंद भजन बिनु तिलु नहीं माने, means you cannot achieve anything without Govind, you know. That's what our Shankaracharya also says, bhaj govindam bhaj govindam bhaj govindam moodamate, you know. So हरि को नाम जपत दुख जाई, कि उससे सारे दुख चले जाते हैं. एंड नानक बोले सहज स्वभाव, then it becomes like once you are into this, then it becomes your sahaj swabhav. That means that when you talk, you only talk Ram Naam only, you know. You only basically your life revolves around that. Everybody knows you by that only, कि ये तो भक्त आदमी है, you know. They have संत आदमी है, they have given up their identity, they are absorbed in that Hari का नाम, you know. नानक बोले सहज स्वभाव. अच्छा, now let's move on to, I'll do a few snippets now so that you understand the essence of it. कहते चार पदारथ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे. जे को आपन दुख मिटावे, हरि हरि नाम हृदय सदगावे. जे को अपनी शोभा लौरे, साध संगी हो में छोरे. जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी परे. जिस जन कहो प्रभु दरस पियासा, नानक ताके बलि बलि जासा. Now in the end it's saying कि जिस जन को प्रभु दरस प्यासा, जिसके मन में भगवान को पाने की आशा इतनी स्ट्रांग है, that's the only आशा remaining in them, you know. उन लोगों के नानक ताके बलि बलि जासा, उनके मतलब बलि बलि जाओ, मतलब आई एम लाइक कैसे कुर्बान हो जाऊं उसके. let me sing the glories of those people whose only intent is कि वो है ना, हरि दर्शन की प्यासी, मीरा का भजन. That's the only goal they have. Hari darshan means now I want to, they are not thinking of a concept, they actually want Bhagwan to manifest for them. they want Bhagwan in their presence. Now they want to feel Bhagwan all around them, you know. That's what their only goal is. So उनके मैं बलि बलि जाऊं. यहाँ पे
चार पदार्थ क्या होते हैं लाइफ में? देर आर ओनली 4 थिंग्स पीपल आस्क फॉर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, दैट्स व्हाट चार पदार्थ है. सो दैट यू, जो भी तुम्हें चाहिए वो हरि से ही मिलेगा. देर इज नो अदर सोर्स. तो उसके कि साध जना की सेवा लागे, और दूसरा जो है इज थ्रू दी सर्विस टू द साध जना, दैट बाय देयर ब्लेसिंग्स ओनली यू गेट दैट. और हरि हरि नाम हृदय सद गावे, जो सदा हरि का नाम ही गाता है, जो भजे हरि को सदा परम पद पावेगा. फेमस भजन ऑफ here anyways. साध जना की सेवा लागे, जे को आपन दुख मिटावे. और अपना अगर दुख मिटाना है तो हरि हरि नाम हृदय सद गावे. तो सदा हरि का नाम ही गाना चाहिए. और साध संगी यह हुग में छोरे, दैट मीन्स अपना अगर ईगो, हमें इज इन माय हार्ट, साध संगी, साध का संग ही विल एलिमिनेट योर ईगो. हुए में छोड़, हौ में मतलब my ego will just go away with the sadh sang, because you become one with them, you understand and you say I surrender it. मैं तो कुछ भी नहीं हूं, I am nothing, you please guide me. That is the, and जे को जन मरण ते डरे, साध जना की सरनी परे. और जो, जिसको जन्म मरण का डर है, that means he doesn't want to be going back and forth life after life after life. It says वो साध जना की सरनी पर है. Now this is, एक तो हरि का नाम है. Now हरि का नाम is going to come from somebody, right? तो साध जना मतलब साधु जनों की, साधु जना की सरनी पर है, शरण में जाओ उनकी. That is the goal, the way to get there. Okay. और Raji, one quick question. ये the line that you read, साध संग एह हऊ में छोड़े, उससे पहले वाली लाइन छोड़े. आपने, उससे पहले लाइन आपने पढ़ी, जे को अपनी शोभा लोरे, उसका क्या मतलब? oh, जे को अपनी शोभा लोड़े, मतलब who, शोभा is like prestige, my, that I have, even if I want that, कि जे को अपनी शोभा, अगर ये भी चाहते हो कि मेरी इज्जत हो, see I can earn a lot of money, but if I don't have a character, if I don't am a good person, what will happen? I may feel I am great, but people will say बड़ा कमीना आदमी है. You may have everything, but you will still not get the appreciation from others. So for that, शोभा लौरे, साध संग ये हव में छोरे. और जब तक ईगो नहीं खत्म होगी, और वो खत्म होगी विद द साध संग. इट्स लाइक you reverse that logic here. So if you want that glory, don't run after material, run after sadhu sang, run after satsang. मतलब even if you want to be well regarded, पहले अपना अहम छोड़ो, फिर आपका अहम अपने आप छोड़ो, ही. क्योंकि with aham nobody will regard you. हम्म. So that is the uh, Yeah, thank you. okay, sure. So सगल पुरख मही परुख प्रधान, साध संगी जाके मिटे अभिमान. आपस कऊ जो जाने नीचा, सौ गनिये सबते ऊंचा. जाका मन होई सगल की रीना, हरि हरि नाम तिनी घटी घटी चीना. मन अपने ते बुरा मिटाना, पैखे सगल सृष्टि सजाना. सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं लेपा. हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. इट्स अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. सगल पुरख मही पुरुष प्रधान, सब लोगों में कौन है प्रधान? हु इज द बेस्ट अमंग द मेन? इस इज साध संग जा का मिटे अभिमान. जिसने साधु के संग से, सत्संग से, बाय फॉलोइंग व्हाटएवर साधना, हैज रिमूव्ड हिज अभिमान. अगर आपने
पढ़ लिख के अभिमान किया तो फिर यू हैव लॉस्ट इट, यू नो. सो अभिमान इज द गोल टू रिमूव. रिमूविंग अभिमान इज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर. आपस कऊ जो जाने नीचा, यू नो, जो सौ गिनिए सब ते ऊंचा. जो अपने आप को कह रहा है कि मैं आई एम नोबडी, आई एम नथिंग, उसको मान लो कि वो सबसे ऊंचा है, यू नो. आके गिनिए सब ते ऊंचा. और जाको मन होई सगल की रीना, मतलब seeing the glory of that truth in everyone, you know, that that one is shining through everyone. Hari Hari Naam Teeni Ghati Ghati China. So which actually means the same thing as the previous verse, that I'm just thinking now in this Sagal Kirina is the one who is humble, who is very modest, or all that, you know, because he has done Hari Hari Naam Teeni Ghati Ghati China, that he has removed slowly all his attachments by attaching himself to the Hari Naam. और मन अपने ते बुरा मिटाना, अपने मन से सब बुराई मिटानी है धीरे धीरे. बुराई इज व्हाट? बुराई इज अटैचमेंट्स. बुराई इज नॉट जस्ट कि सिगरेट छोड़ दी या शराब छोड़ दी. अटैचमेंट टू थिंग्स इज द प्रॉब्लम. सो दैट अटैचमेंट्स हैज टू बी रिमूव्ड. पैखे सगल सृष्टि सजाना, यू नो. पैखे मतलब देखना, सगल सृष्टि सजाना. That let's read the next one, then it will make it clear. Sukh dukh jan sam drasteta, नानक पाप पुण्य नहीं लेपा. जिसने सुख और दुख को सम जान लिया है, जैसे हम भगवत गीता में कहते हैं ना, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्ससि. The same way here Guru Arjan Dev is saying that the sukh dukh jan sam drasteta, that sukh hai to bhi theek hai, dukh hai to bhi theek hai, you know, he is not bothered about that. That is what it says, pekhe sagal srishti sajana. That means he is looking at सृष्टि as the manifestation of that one. So उससे आपको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, you are some in that. Some means you are not, you are unmoving in that. Samdrasteta. It's exactly equivalent of that. Sukha dukhe samay kritva. You know, Nanak paap punya nahi lepa. That means he is not, he doesn't worry about paap and punya. He has gone beyond paap and punya. पाप और पुण्य जो है ये दोनों ही कर्मों से हैं, राइट? पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है. Now this person who is gone beyond it, that means the karmas are not touching him, क्योंकि पुण्य भी बांधने वाले हैं. One can bind you with a golden chain or with a metal chain, it doesn't matter. Chain is a chain. So पाप और पुण्य दोनों ही बांधने वाले हैं. तो कहते हैं the one who has understood that, you know, with that he says पाप पुण्य नहीं लेपा, that he is not lepa means attached, or he is कि उसके ऊपर पाप पुण्य का कोई असर नहीं होता है. He is unaffected by पाप and पुण्य. Okay, quickly we'll do the next one, just two more. I'll just read both the things together and we'll wrap it in 5-10 minutes. Okay. निर्धन कौधनु तेरो नाउ न थावे कौ नाउ तेरा थाउ न माने कौ प्रभु तेरो नामु सगल घटा कौ देव नुदानु करन करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपनी गतिमिति जानहु आपे आपन संगी आप प्रभु राते तुमसी अस्तुति तुमसे होई नानक अवरु न जानसी कोई
सब धर्म मही श्रेष्ठ धर्म, हरि को नाम जपी निर्मल करमु। सगल क्रिया मही उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मति महु महलिया। सगल उदम मही अदम भला, हरि का नाम जपहु जियत सदा। सगल बानी मही अमृत बानी, हरि को जसु सनी रसन बखानी। सगन थान ते अहु उत्तम थानु, नानक जिय घटी वसे हरि नामु। निर्गुनिहार अच्छा, this is the end of the third Ashtapadi. Now let's do the last. Just give me a few extra minutes, please. कहते हैं निर्धन कऊ धनु तेरो नाव। मतलब जो निर्धन है उसके पास किस चीज का धन है? आपके धन, आपके नाम का धन है। यू नो, ही इज द धनी हु हैज द नेम ऑफ भगवान। ही इज नॉट निर्धन, ही इज धनी। और निथावे कऊ नाव तेरा थाव, जिसके पास रहने की जगह नहीं है। निथाऊ मतलब जिसके पास कोई जगह नहीं है, उसका नाम ही उसका घर है। यू नो, ही इज रिजाइडिंग इन, थाऊ मीन्स जगह, इन प्लेस। निमाने कऊ प्रभु तेरो मानो, जिसका कोई हु इज रिजेक्टेड बाय द वर्ल्ड, यू नो, निमाने मतलब जिसका कोई मान नहीं है, उसका मान प्रभु तेरो मानो। यू नो, प्रभु का नाम ही उसका मान है। यू नो, सगल घटा कऊ देवहु दानो, और सबको देने वाला एक भगवान ही है, और कोई नहीं है जो देता है। यू नो, करन करावन हार स्वामी, और करने कराने वाला भी एक वही स्वामी है। करने कराने वाला मतलब वी थिंक वी आर डूइंग इट, राइट? वी आर द डूअर, बट एक्चुअली if you think about it, every effort is done by us is actually because the power that Bhagwan is providing in us, that life that Bhagwan has given us, that life is the one that allows us to do things. So Karan Karavan Har Swami, O Swami, O God, O Hari, O Govind, you are the one because of which I am able to do anything. You know, Karan Karavan, understand that part. सगल घटा के अंतर जामी, और ये नहीं कि आप बाहर बैठे हैं, you are inside me, you are antarjami, antarjami, you are the inner self of everyone, not just me. सगल घटा के, of everything. करण करा, अच्छा, अपनी गतिमिति जानो आपे। नाउ कैन आई नो यू? कहते हैं अपनी गतिमिति जानो आपे। यू आर द वन हु नो योर ओन सेल्फ। I can't know it. I don't have the capacity to know it. I don't have the ability to know it. So, अपनी गतिमिति जानो आप ही जानते हो अपनी गतिमिति। अपनी गति मतलब who are you? Where did you come from? Where are you residing? Where will you be going? What is your gati? मतलब what is your goal? We don't know. You know, कोई नहीं जान सकता। अपनी गतिमिति जानो आप ही जानते हो। और तुम्हारी स्तुति तुमते होई। अब ये कहूं कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट वैलिड, बिकॉज आपकी स्तुति करने के लायक भी नहीं हूं मैं। आप ही स्तुति, आप ही क्या क्या आपन, वेयर डिड आई रीड दैट? ओके, तुम्हारी स्तुति तुमते होई, तुम ही कर सकते हो अपनी स्तुति। मतलब प्लीज गिव मी द एबिलिटी टू डू योर स्तुति, बट यू आर द करण करावन, मतलब आप ही करने कराने वाले हो। आपकी वजह से ही मैं स्तुति कर सकता हूँ। नानक अवरु न जानसी कोई, नानक इसके अलावा और कोई कुछ है नहीं। मतलब दैट मीन्स दैट अलोन इज द ट्रूथ दैट परवेड्स एवरीथिंग। दैट्स व्हाट इट मीन्स हियर। सब धर्म मही श्रेष्ठ धर्मो, सब धर्मों में कौन सा श्रेष्ठ धर्म है? हरि को नाम जपी निर्मल कर्मो, हरि का नाम जपना है। और कर्म कैसे करने हैं? निर्मल, मतलब विदाउट एनी ब्लेमिश, डू द राइट थिंग्स। यू नो, हरि का नाम जपना है और डू द राइट, द टू आर कंबाइंड टुगेदर। इट्स नॉट लाइक कि हरि का नाम तो जपना है बट काम गलत मलत करने हैं। यू नो, सो यू हैव टू डू द राइट थिंग्स एंड हरि का नाम जपना। सो दैट इज द ओनली धर्म दैट यू हैव टू फॉलो। यू नो, श्रेष्ठ धर्म। सगल कृप
Kriya mahi uttam kriya. Kriya means the actions. What actions should I do? You know, what is the uttam kriya? Sadh sang durmati malu hariya. साधु का संग करना है and durmati and mal, the wrong thoughts have to be avoided. Sagal udam mahi uddamu bhala. Effort. Uddam means effort. So sagal udam mahi uddam bhala. What is the best effort that I should put in? You know, हरि का नाम जपहु जियो सदा. अपनी जबान से हरि का नाम लेना is the best effort. Or this is the most desirable effort. You know, जपहु जियो सदा. सगल बानी मही अमृत बानी. सब वाणियों में अमृत वाणी कौन सी है? Which is the golden words that I have to remember. हरि को जसु सुनी रसन बखानी. हरि का नाम अपने याद करना है और उसका बखान करना है. Use the, you know, if you have to speak something, then speak of Hari ka katha. You know, why waste time in talking about anything else? So, sagal bani mahi amrit bani, Hari ko jasu sani rasan bakhani. Matlab rasan is speech. Rasna is zaban. Sagal than te ahu uttam thanu. Sthan matlab place. What is the highest place to go to? Or सगल थान, सब जगहों में कौन सी जगह सबसे बेस्ट है? यू नो, नानक जिस घटी वसे हरि नाम. जहां पे हरि का नाम बसता है, बस वही जगह सबसे बेस्ट है. अगर कोई और बातें हो रही हैं तो वो बेकार है. सो फोकस ऑन दैट अलोन. सो क्योंकि यहाँ पे I'm sorry I rushed into this, but you get the essence. But anytime, any thoughts, questions? Are you all enjoying this? Because now we have to think about, do we want to take it, complete it, or we are good with this? So we'll stop here. And I can stop It would the be nice recording to also. it would be nice to finish it because